ऐसा घर जहां पर जो एक बार अंदर आता है फिर निकल नहीं पाता। ये नजारा है डिज्नी हॉटस्टार की नई वेब सीरीज लाइव टेलीकास्ट का, जो भारत की कई भाषाओं में एक साथ आ चुकी है। इसकी शूटिंग हुई है तमिलनाडु के येरकॉड नाम के हिल स्टेशन में। इसमें तमिल इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के कलाकार हैं। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है वेंकट प्रभु ने और इसमें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार हैं। सबसे पहले मिलते हैं आनंदी से, जो इस वेब सीरीज में एक अहम किरदार निभा रही है। So I'm in Yerkod and I'm joined by Anandi, who is playing an important role in the film. And actually, this web series is a classic example of national integration because we have talked to people from the Tamil industry, Hindi film industry, and Anandi represents the Telugu film industry as she is from Hyderabad. So first of all, Anandi, how are you enjoying here? Yeah, I love this place. Nature, no mobiles, no signals, detached from the world. I'm loving this. So first time here in Yerkod or have you been before? No, it's my first time. Okay. So were you surprised? This is Tamil Nadu's best kept secret. You know, we didn't hear about this hill station at all. So, what was the best thing you find here? Except not mobile phones, the weather, the food, the location. What is like keeping? Haunted house. Okay, the haunted house. Yes. The Yes. subject of your film. So actually, film. Actually, this web series is looking like a film only. So tell me something about it. Yeah. The show is about young media professionals who get trapped inside a haunted house. And this is the haunted house, and we have been shooting here from past 15 days. And we don't have phone signals and anything, and we get to play on the sets, and it's a lot of fun here. It's actually a supernatural thriller, which is like that. So who's the ghost? I can't reveal that. There are a lot of ghosts. Okay. So, but tell me, do you believe in ghosts in real life? Like, you know, what do you feel? No, I don't believe in ghosts. Public loves to see that. So, Favorite genre of which is the last ghost film you had seen? me? I forgot. I don't know. But what do you normally watch on TV? On what kind of web series do you watch? You know, what is your normal viewing pattern? Do you watch TV serials? Do you watch international web shows? I watch international web shows. I love 13 Reasons Why. I like Game of Thrones, Secret Games, and Hyper Hot Stages. Yeah, a couple of shows. And I'm a big fan of Hotstar. Like, I can watch the digital content anywhere, and I can access it anytime. It's good. And we are happy that this is the first ever Tamil original show, which is from Hotstar Specials. And pretty excited. So, but actually, how are you managing Tamil? Since your main language is Telugu, so we can talk while we explore this house. So, your main language is Telugu, but Tamil, how you manage? Can you understand and? Yes, I dub for myself now, and I've got that grip in my first movie itself. When I've worked, I used to observe my hairstyle, Akka, and she used to teach me, and that's how now I can fluently talk in Tamil. But these days, with this access to these applications, these web series, even your Telugu films, people must have watched on some. So, do you get like compliment from people? Oh, we saw you in that. So, Yes, all the South Indian, yes, as you said, there's no language barrier now. People get to watch any film, any language film on these digital platforms. So I'm very happy with the response I get and with the love and support they give me. so what is the kind of look you have in this show? Since you play a fashion designer. Though she's a fashion designer, she is from Tamil Nadu, who is very traditional and who looks like this. Yes, that's what Yeah, you have this hair. Western kind of. Your hairstyle is like this only. Yeah, it's pretty much this. So looking at you, it reminds me of Roja Madhu, that Chinna Chinna Asai, that song. Oh, so sweet. That's a nice comparison. Thank So you. can we have the song from you in Tamil? Chinna Chinna Asai, Hindi, Choti Si Asha. I can sing it in Telugu. No, Telugu. Yes. చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదాని ఆశ
Muttu muttu asa, mutyamanta asa. That's it. तो जब दिस सॉन्ग ये जब पहली बार मैंने हिंदी में देखा तो मतलब आज भी जब कि खुली हवा होती है व्हेनेवर आई सी अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस सॉन्ग जस्ट कम्स टू योर माइंड सो इसी तरह से कुछ क्लासिक मोमेंट्स होते हैं इन दिस आई थिंक दिस वाज अ क्लासिक मोस्ट क्लासिक फिल्म एवर मेड सो व्हाट मेमोरीज यू हैव ऑफ रोजा Of this film? Roja this film this song you say so when you must be a kid when this film was released Yes, I was a kid, really. And I'm a dancer. When I was a kid, I used to dance and I used to perform for such female songs, and I had good memories. so what next where can we see you which other projects you're doing besides this Besides this, 4 of my Tamil movies are ready for release. One is Gundu, like couple of Tamil projects. They're ready for release. So lots of Anandi in the coming time. Thank you so much, and all the best for all your projects and this one especially. So looking forward for this spooky thriller. So what do you have to say to your fans in Tamil and Telugu? I want you to speak in Tamil and say to your fans. Okay. இந்த படம் இந்த ஷோ வந்து ஒரு ஒரு நல்ல கிரிப்பிங் அண்ட் த்ரில்லர் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அண்ட் வி ஆல் நீட் யர் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் இது கண்டிப்பாக ஓ திடீர்னு தமிழில் பேசும்போது ஒரு மாதிரி இருக்குது ஓகே ஃபைன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இட் அண்ட் மோஸ்ட்லி டிசம்பரில் வில் stream, so don't miss it. Thank you so much. अब मिलते हैं वैभव से जो इस शो में नजर आएंगे। वैसे काजल अग्रवाल के साथ वैभव का भी इस वेब सीरीज में अहम रोल है। मैं आपको मिलाता हूँ इस वेब सीरीज़ के हीरो से और मेरे साथ इनको तमिलनाडु का हर कोई आदमी जानता है इनकी फिल्में बहुत हिट हुई हैं तो इनसे जानते हैं कि क्या है ये वेब सीरीज़ सो आजकल टाइम बदल गया है पहले फिल्में आई टीवी सीरियल्स आए और अब आ गई हैं वेब सीरीज़ तो ये जो वेब सीरीज़ है तमिल में शूट हो रही है लेकिन बाकी भाषाओं में जाएगी तो आपको क्या लगता है कि डब करेंगे तो ये डबिंग से काफ़ी कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो आई थिंक इट्स अ न्यू बिगिनिंग कि आज ऑडियंस सब जगह जा रही हैं कंटेंट दूर तक पहुँच रहा है तो क्या लगता है आपको उस ट्रेंड के बारे में It's a very healthy one, I think, because people are they're used to they started watching movies and everything, web series on their phone, because they don't have time. It's a good thing that Hotstar's come up with a big budget first time for the south with Venkat Prabhu. And this is called live telecast with Kajal Agrawal and another girl, Anandi, myself, and 2 more artists. It's a new genre. I think it's a new genre, something new. It's like a bunch of friends where they study together and they're from media. They work for media and they want to do something new content, and they wanna exploit a house which has got a ghost kind of thing, and they want to do a different program, and how they get caught in something new and nice. It's got nice 8 to 10 episodes, I think. You have to watch it. I can't tell more, so you'll have to watch it on Hotstar. तो ये जगह जो बड़ी सुंदर है तो वैभव के साथ हम एक टूर लेते तो वैभव थोड़ा बताएं ये जो लोकेशन पीछे है एक स्पूकी हाउस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो किस तरह का पूरा ये मतलब हमें तो ये ऐसी चीज़ें बॉम्बे में मिलती नहीं देखने को तो Kandala में वाली बात नहीं है यहाँ पे जो हवा है वो बड़ी खूबसूरत है जो मतलब यहाँ का माहौल है very cold, nice, breezy. तो तमिलनाडु में भी लोकेशंस काफ़ी सुंदर हैं इनफैक्ट ऊटी जैसे कि इट्स मोस्ट प्रेफर्ड बॉलीवुड डेस्टिनेशन इज वेयर तो व्हाट यू फील तमिलनाडु के हिल स्टेशन के बारे में कितने खूबसूरत हैं It's very beautiful. This is the first time I've come to I've been to hill station like Kodaikanal and Ooty and all. Ooty is known for Bollywood films. So this is a nice small place, but they wanted this house because of the backdrop, small hilly place and dense forest. And all. So
it's nice, chilly, and nice to work also. खास बात ये है कि जो ये इनका रोल है ये हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, जो काम हम लाइफ में करते हैं। आई थिंक मीडिया का काम तो आपने हमको ऑब्जर्व किया, क्या क्या बातें आपने मीडिया वालों के बारे में आप अपने कैरेक्टर में डाली है इसमें? Actually, I play a art director in this movie. Art director. So rest of them are they study direction. One is from camera and makeup and everything. So it's a different experience. First time I'm doing the art director thing, and yeah, it's nice. It's very tough to be in media, I think. So good we came into cinema. तो वैभव, तो एक्चुअली हम बॉम्बे से आए हैं तो जानते हैं कि वैभव आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, तो थोड़ा तो कितनी है वैभव के फैंस के लिए जो तमिल में इनको देखते हैं। आज हम देखते हैं कि वैभव कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तो आप हमें हिंदी में कोई डायलॉग बोल के दिखाएं कोई भी। मैं तमिल में बोलूँगा। Hindi dalal picture. Any dialogue which comes to your mind? शोले का, Popular. Any film you had watched lately? So many, but I don't remember the dialogues because not so fluent in Hindi. But I remember this one, Dar, na? Dar. Kiran, that one. That's not a dialogue, but still, that's taken over Tamil Nadu because of that. And Bazigar. So many films. Dialogue, मालूम नहीं. वेरी क्यूट। सो मेरे को तो तमिल में एक ही वो आता है, यपड़ी यिरका नल्ला रिक्का। के नल्ला के कैसे आप? आई नो कादल। कादल, love, yeah. So the films are Kadal based, so of course I know the word Kadal. So अभी जैसे मैंने बात की कि आजकल Netflix पे, Amazon पे, Hotstar पे लोग तमिल तेलुगु, तो आपको ऐसे लोग मिले कि आपको आपकी फिल्म हमने इसमें देखी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपके फैंस अभी आई थिंक दे आर मोर रीचिंग आउट टू यू बिकॉज आजकल वर्ल्ड वाइड पीपल आर वॉचिंग कंटेंट ऑन दिस थिंग। सो कुछ आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि आपकी फिल्में हो सकता है उन्होंने किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देखी हो? It is there in some. My last release is on another platform. Hotstar also they have some of my films. Yeah, now everybody they want the films on some platform. So it's good to be on some platform after theaters. So is that the question you asked me? Right? Yeah. तो अच्छा है, इस एक्टर्स के लिए अच्छा है कि ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं। इट्स अ न्यू मीन्स टू रीच People who don't watch movies in theaters also know this is a very good way. They can just watch it on their phones and they get to know artists more, and we are happy about that. इसमें आपका लुक और फील कैसा है? आपने मतलब सिंस यू आर्ट डायरेक्टर हैं तो आपने कैसा मतलब This is the look they gave me. I think like simple casual look. Yeah, I think in Bombay their art director. I don't know. I haven't met anyone, but I think Bombay's got more style. So they want because this is going to be dubbed in Hindi and other languages too. So they did something like this. Otherwise, my art director is there sitting with a normal shirt and jeans. ये बता, हिंदी फिल्मों में कभी आपने सोचा नहीं कि एक बार ट्राई करके देखें वो भी? Who doesn't want to act in Hindi? Everybody. किस तरह की फिल्में आप करना चाहेंगे? आजकल हिंदी फिल्में भी काफ़ी बदल रही हैं, काफ़ी रियलिस्टिक हो गई हैं। एक ज़माना था, मतलब एक नया दौर हिंदी फिल्मों में भी आया है, तो आपको क्या लगता है वैसी फिल्में करना चाहेंगे कि एक्शन पैक जैसी आप साउथ में करते हैं कुछ तरह की? No, I recently, after Ranveer Singh or Ranbir Kapoor, Ayushmann Khurrana, he's doing great films, and the other, I don't remember his name. Rajkumar Rao, yeah. They've just changed the trend, so it's really good to see Hindi films like that because earlier 80s it just used to be action or some family drama, but now lots of genre, Badai Ho, and they're trying to make it in Tamil, but they're not able to get the proper, mainly the father character. So many things like that. So it's totally changing. Always Hindi is a trend-setting thing. They change the trend, and even Tamil too. What about तमिल फिल्म्स? डू यू थिंक उनका क्या स्टेटस है? वो लोग भी काफ़ी अडॉप्ट हो रहे हैं, और आजकल तो जैसे इतना मतलब एक्सचेंज इतना होता है हिंदी फिल्म और तमिल फिल्मों में, हमेशा से ये होता रहा है, तो आजकल व्हाट यू फील अबाउट द करंट तमिल फिल्म इंडस्ट्री? व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म दे आर मेकिंग? The Tamil industry, they always want to explore new things. In a year, if 50 films releases are there,
20 will be a new experiment, and they want to try new things. That's there from very long time. So it's a really good thing about Tamil audience. You know, it's whoever it is, even if a new hero comes with a good script, they just watch it. So they just want good content, and who acts, they're accepting. तो जाते जाते मैं वैभव से कोई आप 2 गाने अपने कोई गुनगुना दें, तमिल में भी चलेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए 2 आपके कोई गाना हमारे लिए अगर आप गुनगुना सकें। तमिल में आज तक चैनल बहुत अच्छा बड़ा चैनल है. People start liking me after this interview, but by singing I think they'll start hating me. Maybe one Hindi song from you. From me? Ah. I can sing a Tamil song. They do. Chak chik puk raile adarina nistaile. So if I sing a Tamil song, you'll sing a Hindi song, okay? After. So yeah, and I know this. I was singing in my car this song, from Kandu Konde. Kandu Konding. And I love that film. This one, I forgot the lyrics. I'll just remember it. Yeah. Kunjum nirikkare. Sorry, pardon me for the. I forgot the lyrics. What is it? Kanna muchi ennada. Ni kanna muchi ennada. That film. It just, but all the Mani Ratnam songs are like really hummable. Yeah. So now I have to sing a Hindi song. Hindi song. हिंदी लिरिक्स नहीं मालूम. Just humming. Important. दिल से गाना चाहिए. दिल से गाना था. लेकिन मैंने तमिल लिरिक्स जानते हुए भी गाया. ओ लास्ट कबीर सिंह का सॉन्ग है ना क्या? What is it? बेख्याली. बेख्याली. You just sing, no? Just hum. बेख्याली. I just know the tune. I don't know the lyrics properly. So बहुत अच्छा गाना है हिंदी में. और अरिजीत सिंह और recent songs, no? Very good. We listen to it nights. So I think that's the beauty of Indian cinema. हमारे Indian cinema में इतने इतने कल्चर सब कल्चर्स हैं कि हमें कहीं बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आई थिंक वैभव, ऑल द बेस्ट. एंड आपको हम जल्दी, अब ये आपका डिजिटल डेब्यू तो हो गया है, हम आपको जल्दी हिंदी फिल्मों में देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस टू योर शूट लोकेशन.